गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। मैं यहाँ पे डॉक्टर प्रदीप गुणशेखरन आए हुए हैं कोयम्बटूर से, PSG हॉस्पिटल से, और मेरे अच्छे मित्र हैं। और मैं इनको यहाँ पे मैंने इसलिए बुलाया कि यहाँ पे हम लोग हार्ट फेलियर और हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए एक OPD ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और ये एक रेगुलर प्रोग्राम चलेगा। धीमे धीमे यहाँ पे हार्ट फेलियर का सब स्टेशन जिसको बोलते हैं वो रहेगा। हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधाएं यहाँ पे हम लोग अरेंज करेंगे चरक हॉस्पिटल में। सो बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड टू मच ऑफ हिंदी, सो वी विल टॉक इन हिंदी एंड इंग्लिश. I will keep on translating on behalf of Dr. Pradeep. So, Dr. Pradeep, welcome. Hello. Welcome to Charak Hospital and welcome to Lucknow. लखनऊ में आपका स्वागत है. Thank you. मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं. और एक अच्छा कोलैबोरेशन है मेरे ख्याल से. एंड I would like to know what is your experience in heart transplant and heart failure treatment. Hello all, I'm Dr. Pradeep. I'm a cardiothoracic and vascular surgeon, and my area of specialization is managing end-stage heart disease or heart failure. So I'm into heart transplantations for last 6 to 7 years. I've been trained under the world-renowned cardiac surgeon Dr. K.R. Balakrishnan from Chennai. So I've been fortunate to work with him for nearly 4 to 5 years in Chennai. Then I moved to Coimbatore. Now I'm working as a consultant and program head in PSG Hospitals, Coimbatore. So in Coimbatore we have started our program for exclusive heart failure patients, where we manage patients who are in heart failure medically, and when medical management don't help much, we go in for heart transplantations, where we explant a heart, failed heart, and we implant a heart from a deceased donor. So this is one modality of managing heart failure. There are a lot of ways where you can manage heart failure, but heart transplantation has given new life to a lot of people, and my experience in heart transplantation is nearly more than 300 cases. And in Coimbatore, I was the leading program, and one of the leading program in Tamil Nadu. As you all know, Tamil Nadu is like capital of Indian capital of medical field. So we are running one of the leading program in heart transplantation from Coimbatore, and we get patients across the country, even from outside the country. We get a lot of international patients also for managing end-stage heart disease. How will you identify that the patient is having heart failure? आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस पेशेंट को हार्ट फेलियर है? क्या क्राइटेरिया? Okay. So how do you identify heart failure? What is heart failure? So when we call the heart has failed. So heart, as you all know, it's a pumping organ. It pumps blood to all the organs in the body, and this pump should be good enough to pump all the blood, and the force should be good enough to blood to reach each and every cell in the body. So when this pump fails, then we call it as a heart failure. So when this pump fails, so as a pump, heart needs blood for itself. Heart needs a fuel for the heart to pump. So that is supplied by 3 important blood vessels. So when there is a block in all these 3 blood vessels, the heart muscles slowly goes down in their normal function, and when it is for a long time, all these muscles don't work and it becomes permanent. So the effective contraction of the heart goes down. The other reason for heart failure is there is an issue in the heart muscles itself. So those patients also can go into heart failure. So all these young patients whom we see in heart failure, most of the times it is because of the problem in the muscles itself. And third thing is when there is a gross abnormality in the structure of the heart. So in those cases,
those patients can go in for heart failure, which in terms is the failing in the effective functioning, effective pumping of the heart. डॉक्टर प्रदीप ने जैसे बताया कि हार्ट फेलियर का मतलब ये होता है कि हार्ट क्योंकि एक पंप की तरह काम करता है और ये पंप का जब फंक्शन कम हो जाता है तो वो हार्ट फेल कर जाता है। उसके 3 कारण होते हैं। एक इस्कीमिक हम लोग बोलते हैं जिसमें कि ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आती है हार्ट के और उसकी वजह से वो हार्ट फेल करता है। दूसरा होता है कि हार्ट की मसल्स में प्रॉब्लम आती है और हार्ट की मसल्स कमजोर हो जाती हैं तो वो पंप करना कम कर देता है। और तीसरा होता है कि हार्ट के स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम हो और इसकी वजह से हार्ट फेल कर जाए। तो ये 3 कारण होते हैं हार्ट फेलियर के। और जैसा इन्होंने इससे पहले बताया कि हार्ट फेलियर के मेडिकल मैनेजमेंट भी होता है और फिर एक जो इन्होंने बोला कि हार्ट ट्रांसप्लांट में काफ़ी इनका काम है। मैं इनके गुरु के साथ 10 साल काम कर चुका हूँ, डॉक्टर के चेरियन के साथ। तो हार्ट ट्रांसप्लांट हम लोगों ने भी किए थे और बट यहाँ पे आने के बाद मैं केरला और चेन्नई में काफ़ी साल 14 साल करीब रहा हूँ और इसीलिए मेरा इंटरेस्ट ये भी है कि हम लोग एक वर्क कल्चर जो वहाँ का अच्छा वर्क कल्चर है वो यहाँ पर लेके आए और इसीलिए हम लोग PHG से कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो डॉक्टर प्रदीप थैंक यू। अब ये बताएं कि हार्ट फेलियर का हार्ट ट्रांसप्लांट के अलावा क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। What is the other modalities of treatment for heart failure except heart transplant? Surgical treatments. Okay. Not all heart failure patients has to undergo heart transplant. So when we identify a patient with heart failure, where we do by echo, we identify a patient's heart is not functioning that great, it's not pumping like how we expected. The effective functioning of the heart has gone down. So naturally there will be stagnation of blood in the heart. So the heart begins to swell. So the heart size becomes bigger. And this creates a lot of issues in other organs. So first thing what we try to manage is manage by medicines. So there are a lot of ways where you can try to improve the heart's function to an extent. And there are a lot of ways to decrease the load on the heart. Like for example, you can remove the excess water from the body by using drugs, so that we can make the patients pass good amount of urine, so that the blood stagnation in the heart volume comes down. And second thing is there are other ways where you can control the blood vessels so that the heart load is a bit low. And third thing is there are surgeries where you can remodel the structure of the heart so that effective functioning of the heart improves. And other alternative for transplant is going in for assisted devices, where you can implant a mechanical pump into the heart so that the mechanical pump does part of the work of the heart, so that the heart is supported by another pump within the body itself. And now recently lot of advancements has come in the pumps. So like with the mechanical pump, there are patients who are living for decades together without any issues, and this is being widely practiced across the world. And in India is also, it's coming up in a big way. So whenever a heart failure patient is there and they don't want to undergo a transplant, if they are more worried about a transplant, they can always go for pump implantations. Pump implantations, and there are multiple ways to implant. It can be as small as you can go through the peripheral blood vessels and park a small pump in the heart, or you can open the chest and you can implant a pump also. When all the options of medical management has been tried out, then we go for surgical options. Surgical options, there are a lot of other options. So Dr. Pradeep ने जैसा कहा कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, देयर आर मेनी ऑप्शंस। उसमें होता है कि पहले हम ट्राई करते हैं कि मेडिसिन से हार्ट फेलियर को कंट्रोल किया जाए। अगर मेडिसिन फेल होती हैं तो फिर हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। कई सारे ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे कि हमने कहा कि हार्ट एक पंप है, तो हमको अगर पंप कमजोर हो गया है तो हम दूसरा पंप भी वहाँ पे लगा सकते हैं। तो छोटे छोटे पंप्स आजकल आ गए हैं, हार्ट के पंप्स, जिसको असिस्ट डिवाइस हम लोग बोलते हैं, वो आ गए हैं और उनको लगाया जा सकता है जिससे कि हम हार्ट को सपोर्ट कर सकें। ये पंप इस तरह से भी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जो चेस्ट होल पे भी लगाए जाते हैं, या उनको हम
जो नसें होती हैं उनके थ्रू भी इसको डाल सकते हैं। तो हार्ट ट्रांसप्लांट के अलावा ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। और हार्ट ट्रांसप्लांट फिर लास्ट ऑप्शन होता है कि अगर हार्ट ट्रांसप्लांट कोई नहीं कराना चाहता है तो इन सब चीज़ों से भी हम लोग उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो थैंक यू डॉक्टर प्रदीप। नाउ टेल मी हाउ द कोलैबोरेशन हैज हैपेंड बिटवीन चरक and PHG Hospital. As you know, Dr. Pankaj sir is his roots to Tamil Nadu for decades. So, and he is very desperate to bring heart failure program to Lucknow and Uttar Pradesh. Since not much activities are happening in Lucknow and Uttar Pradesh, and there are a lot of patients who needs help and support in Uttar Pradesh. So he is very desperate, and this is not a single man's job. It's a pure teamwork. Not a single surgeon can do things. So he needs, though he is very much experienced in managing heart failure and transplant, he needs one more support expert and experienced support from an already running center. So we happened to meet, and he was like very hell-bent in bringing a heart failure program to Lucknow and Uttar Pradesh, especially in the Charak Hospital. So when he approached us, I was very much ready, because there are a lot of patients here, they need help. And thing is, like most of the 90% of the patients for heart failure management, they travel all the way to Tamil Nadu, because a lot of works are happening there, a lot of donations are happening there. And some patients could not travel all the way to Tamil Nadu, so they need, for each and every visits, they cannot come to Coimbatore. So he wants to set a satellite center in Lucknow, so that we who are experienced in transplantations can come and see the patients, can speak to the patients, can manage patients as much as possible through medical management. And when a stage they come where they need a surgical management, heart transplants, definitely we can find the options to operate here, but this is still there are a long way to go for a transplant to happen here. And for time being, probably patients can come to Tamil Nadu, they can get operated there, and further management post transplant they can very well be managed here. And down the line, Charak is very determined to improve their facilities for heart transplantations, and they are working on it. And I think by an year or so, they will be ready to do heart transplant here. So in the meantime, this is 1 year or so, probably patients can come there and they can get it done. And we are getting patients from across the country, from right from Jammu and Kashmir to Kerala, Tamil Nadu. We are getting patients. And we are getting patients outside the country also, Russia, Turkey, Bangladesh, and they come get operated from us, and they go back home. And we have a big team where patients need not come all the way to Coimbatore for their further follow-ups. So we will go to their place, some sentinel centers. We see the patients there, and we take care of post-operative management from there. So there is a big opportunity to get a new heart, new life with this program. And soon we will try to bring the program here in Charak itself. So soon heart transplants will happen here. Not only heart, we are doing lungs also. So heart and lungs are like siblings. So when there is an issue in the heart, its impact will be seen in the lungs too. So touch wood, by God's grace, things will go on well, and we should be able to help a lot of people. Great. So जैसा डॉक्टर प्रदीप ने बोला कि हम लोग मिले अभी रिसेंटली, 1 साल भर करीब हुआ है कि हम लोग की मुलाकात हुई, एंड ये बहुत मुझको अच्छा लगा कि वेरी यंग बट वेरी पैशनेट, वेरी स्किल्ड कार्डियक सर्जन हु इज डूइंग रेगुलर हार्ट ट्रांसप्लांट्स. तो मेरा भी ये हुआ कि हम चरक से, मेरा एक वादा था कि चरक को मैं डेवलप करूँगा एज ए गुड हार्ट यूनिट, चरक हार्ट इंस्टीट्यूट को. तो इसलिए मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट किया कि आप भी आएँ. और एज ई सेड कि हाँ, हम लोग जो है कोई भी कार्डियक सर्जरी, कोई भी हार्ट सर्जरी
सिंगल हैंडेडली नहीं हो सकती, उसके लिए एक बड़ी टीम चाहिए होती है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि मैं एक साउथ का वर्किंग कल्चर यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, और क्योंकि मैं खुद साउथ में 14 साल रहा, तो वो वर्किंग कल्चर जब यहाँ पे आएगा, इन लोगों के थ्रू आएगा, और हम लोग डेफिनेटली 1-2 साल में यहाँ पे भी हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकेंगे। तब तक के लिए अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो डेफिनेटली दे आर रेडी टू हेल्प। ये लोग हेल्प करने के लिए तैयार है कि पेशेंट वहाँ भी जा सकता है, उसकी पूरी देखभाल की जाएगी। और उसका PSG मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे टीम भी आई हुई है PSG हॉस्पिटल से, और इन लोगों से हम लोगों की बात हो रही है। हम लोग की एक और भी बात हो रही है कि हम हेल्प करने के लिए तैयार है कि पेशेंट वहाँ भी ऑपरेशन रहेगा। सो वेरी नाइस, थैंक यू प्रदीप फॉर कमिंग हियर, एंड थैंक्स टू योर टीम एज वेल। यहाँ पे आप लोगों का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि हम चरक हार्ट इंस्टीट्यूट को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाएंगे, और जल्दी हम लोग यहाँ पे भी हार्ट ट्रांसप्लांट करेंगे। तब तक के लिए हार्ट फेलियर और हार्ट ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स जो है कोयम्बटूर भी जा सकते हैं आपकी देखभाल में। थैंक यू।